First, control room, we are live now? On. Recording is on. Yes. Great. ठीक है. So let me introduce to this Voice of CA to you first. Friends, Voice of CA is generally for chartered accountants by chartered accountants, and it was founded in 2009, and which has been, Voice of CA is NGO, which has been working for the CA profession since 2009, and was founded by our founder, CA Sanjay Agarwal, who is also Central Council member of our institute, along with his friends and colleagues, who was really dedicated to the professional. And for, it was created for a network platform and to keep our members updated related to the profession. Also, we have been sharing a weekly newsletters through email, and of course our out of box webinars and seminars for professional upgradation of the members. Friends, you will be surprised to know that more than 50,000 members have already joined our webinars since 2009. सो 50,000 से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए हैं, वो हमारे वेबिनार उन्होंने अटेंड किए हैं. एंड ऑल्सो वी हैव डन मोर देन 300 webinars, seminars all across, in the North India till now. And also, our very lesser known initiatives are, Voice of CA job vacancy for our members who are in job, our holistic well-being programs like online meditation and yoga classes, health camps, yoga camps, and much more. We have a very special audit query group also on WhatsApp for where are the experts reply to each and every query related to audit and also the IFRS and GST audit as well. So you can always connect with us through our any social media platform wherever you are active: Facebook, Telegram, YouTube, LinkedIn, WhatsApp channel, anywhere we are available in all the platforms. And also, I would like to update you regarding our upcoming webinars also, which is the latest is on 9 July, around 1:30 p.m. It's on transfer pricing and structuring across the Poland UAE business corridor. उसके बाद हमारा next session है 10 July, 4 p.m. In relation to the very buzz and very, the relevant topic for all our chartered accountants, that is DP Act 2023, which is the new opportunity for our chartered accountants from compliance to advisory opportunities related to DP Act. So friends, today we will discuss majorly, interplay between GST and income tax. कि कोई भी transition है, any transition, what is the impact of transition in the income tax point of view and from the GST point of view. So Shailesh ji will, give his insight that how to, interpret or how to deal with any kind of transition so that, the transition or any call decision we take, it not impact any of the law. So now I will quickly, introduce to the speaker of the session, very learned speaker and very veteran, and Advocate Shailesh P. Sheth ji. He is from Bombay and his qualification is BCom and LLB. He has over 35 years experience in consulting, advisory, and litigation practice in the field of indirect tax laws and has dealt extensively in the areas of indirect tax laws. He has also a regular faculty in the various trade and industry forums on this field and delivered more than 140 lectures and written more than 110 articles on GST since introduction of GST. He has also been awarded a special award of appreciation by Pen and Stationery Association and the Special Jury Award, and is also under the TIO National Taxation Award 2021. So, yeah, friends, this is a good opportunity for all of us to learn with none other than the Shailesh ji, who has joined us from the Bombay. Sir, I would, without wasting any time, I will now, this session is yours now. I'll hand over to you to please continue your deliberation now. Thank you very much, sir, and please continue, sir. Yeah. Thank you. Thank you, Vishal, for the kind words. Listen to PPT call. Hello. Room, please. Can you please show the PPT in the screen? PPT we will show. I'll ask my team. Yes, they are sharing the screen. Okay. Can you please do the full screen? F5 कर दो आप. Control room, please make this PPT in the full screen. Press F5.
Press F5. Yes. Sir, you can say next whenever you want. Okay. Vishal, only one problem. Your control room can I'm having a echo. Mute. Hello? You're audible, Hello? sir. Shailesh ji, you are audible. I'm actually having Yes. echo on any reason? Sir, have you joined from from the mobile and laptop both? No. My mobile is off. Okay. Control room, have you connected through any UltraViewer or any test from the No, system nothing. from No, no, Shailesh sir no, system? no, Then why no, no, there is echo? no. आप लोगों के यहाँ से कुछ वो तो उनके UltraViewer पे फोन थोड़ी में ज्वाइन किए? कनेक्टेड है, वो उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में कनेक्टेड होगा। नहीं सर, आपका फोन में माइट बी ऑन हो। प्लीज टर्न ऑफ, सभी को प्लीज लॉग सभी आउट को हो फ्रॉम रहा द है, फोन। सभी को हो रहा है। यस शैलेश सर, आप अपने फोन से लॉग आउट कर दो। अच्छा, मैं लॉगिन फोन से करूंगा? ये फोन से लॉग ऑफ करो सर, फोन से लॉग आउट कर दो। नहीं, फोन तो मेरा ऑफ ही है। ओके, नहीं वहां से आपका जूम तो नहीं ऑन है? फोन आपके मेरा फोन ऑफ में ही। जूम तो, आपका जूम प्लेटफॉर्म तो नहीं ऑन है वहां पे फोन पे? नहीं, नहीं है। ओके, वहां से आपने ज्वाइन नहीं किया राइट? नहीं, वहां से आवाज ज्वाइन नहीं ठीक किया। लग रही, तो ये भी कटिए, दोबारा कट। ओके, कुछ कुछ एको आ रहा है सर, ही इज राइट। शैलेश जी, आप एक बार प्लीज कंटिन्यू करिए थोड़ा, वी कैन सी इफ। फाइन, जस्ट शो मी द पीपीटी। कंट्रोल रूम, आप पीपीटी प्लीज कंटिन्यू कर लो। वी कैन सी इफ अगर एको रहेगा तो फिर सर को बोलेंगे, हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ही स्लाइड चेंज विल हो रही है, एग्जिट एंड, स्लाइड चेंज हो रही नहीं नहीं नहीं, आप द स्क्रीन इज नॉट शोइंग राइट नाउ। आप है। ओके, जस्ट शेयर जस्ट स्क्रीन करो। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। हम्म। कंट्रोल रूम, प्लीज शेयर दी पीपीटी। आप अपनी शेयर स्क्रीन करके, अभी पहले शो हुआ था आपका। शैलेश सर, डू यू हैव हेडफोन विद यू, एनी ईयरफोन्स? वन एक मेंबर मिनट। हैज सजेस्टेड, अगर आपके हाँ, पास हेडफोन हो तो माइट भी एको का इशू ना हो। ओके। बट आई थिंक इट इज ओके नाउ। यू कैन यू प्लीज आई कंटिन्यू? जस्ट थोड़ा इको आ रहा है। It's still coming, I think. See if you have headphones with you. Thank you, Shivam ji, for your suggestion. We can check if the headphones works. And once again, apologies to all of you for this delay. शेयर ही नहीं हो पा रहा था, पूरा हुआ है। कंट्रोल रूम, आपके पास दो सिस्टम है। यू कैन चेक फ्रॉम अनदर लॉगिन इफ द स्क्रीन कैन बी, इफ द पीपीटी कैन बी शेयर। अभी रिसेंटली, अभी आपने पहले शेयर किया था। जस्ट मिनट। आई एम ऑन लैपटॉप। शैलेश सर, हैव यू पुट योर हेडफोन्स? नहीं, आई कैन राइट नाउ आई हैव ओनली ब्लूटूथ ओनली।
ओके, ब्लूटूथ आपका कनेक्टेड है सिस्टम के साथ, लैपटॉप के साथ? नहीं है अभी कनेक्टेड, आई थिंक इट्स नॉट Connect नहीं। कनेक्टेड विद योर लैपटॉप। आपके लैपटॉप के साथ कनेक्टेड नहीं है अभी। नहीं। सर नहीं तो वी कैन डू वन थिंग, आप अपने फोन से ज्वाइन कर सकते हो, लैपटॉप वाला लॉग आउट कर दो। लेकिन फोन को फोन आपको से। सामने रखना पड़ेगा ऐसे स्क्रीन, मतलब इफ इट इज कन्वीनियंट टू यू। No, no, it's fine with me. My only worry is this कि कॉल आते एको हैं का, इशू होगा। हाँ जी हाँ जी। ट्राई करता हूँ मैं। एको आ रहा है सर। आप सर लॉग आउट करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हो सर, मैं एग्जिट करके। I'll do that. कैन Okay. यू डू दैट? हाँ जी, sure. आप प्लीज लीव करके एक बार दोबारा ज्वाइन करो उसी लिंक से। वी कैन वेट। You have to leave. You can see in the bottom right hand side. And also to all the attendees who have joined, sir, आप लोगों को PPT we will share to all of you. There is some technical glitch, but all the registered person who has joined, we will definitely share the PPT to all of you. We have requested sir to join again. We can wait for 2-3 minutes. Yes, control room screen is visible now. आप Okay. जो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड कर दो। आप अभी जैसे ही सर आएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड से, हाँ शैलेश सर ने भी ज्वाइन कर लिया आई थिंक। Shailesh sir, please try and unmute yourself. Hello. यस Yeah, sir, शैलेश I जी, can hear यस, you. Yeah. ऑल ओके नाउ। I hope so. Yeah, echo ये is coming. ego is coming sir, okay, we are okay. We will listen to you in the नहीं, echo. You can start. आपको echo के कारण दिक्कत नहीं आ रही है ना? When I am speaking there is an echo? No. नहीं फिर then there is some issue from your end. Anyway sir, you can continue, we can see if it is feasible or not, Yeah, whether it sir, is if you have two logins at the same place, Hmm. that is why there can be an echo. Okay, let me see. I'll just try once more. Otherwise, I'll join from mobile. सर आई डाउट आपके मोबाइल पे ये लॉगिन ना हो, आपके मोबाइल से भी आपने, मोबाइल वो मैंने मोबाइल पे ना, मोबाइल पे शो होता नहीं है कि वो कभी कभी ना वो हाइड हो जाता है। वी कांट सी वेदर वी हैव जॉइंड और नॉट, वो माइट भी बैकग्राउंड में चल रहा हो। नहीं सर, मोबाइल मैंने ऑफ ही कर दिया था। अच्छा ओके। Sir, the echo is gone. हेलो। नहीं, मुझे एको आ रही है। आ रही है. It is coming. यस आ रही है इधर इधर कोई इस तरह। मैं लेट मी जस्ट टाइम वंस ओनली, अदरवाइज आई विल जॉइन फ्रॉम मोबाइल। ओके ओके ओके।
Hello. Yes, sir, you can start now. Now it is all okay. I think it is okay now. Sorry. Yes, yes, yes. Please There start. could be Please start. multiple login. I'm sorry. I don't know. Yes, Okay. yes. Anyway, Whatever sir, may be you the can start. problem, I'm just switching off my mobile. Yes, yes. Uh, Good evening, friends. Yeah. Good evening, friends, and thanks for bearing with me for all these technical issues. But I am sure for past month, all of you must be quite conversant and facing the technical glitches for day in, day night for the filing of the GST and appeal. So you wouldn't mind these technical glitches for 10-15 minutes. Please excuse me for that. The today, my subject today is not merely about two statutes, CGST Act 2017 and Income Tax Act 2025, or you can call Income Tax Act 1961. It is about one transaction that can produce two entirely different tax consequences under two different tax legislations. Next. Yeah. Hello. The Can you go back to slide number 2? Yes. I'll just start with Plato. Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws. This quote by Plato perhaps explains modern tax administration and the challenges which are being faced by the modern tax administration than many judgments will do. Next. Technology has strengthened the law, but human conduct still remains the same. It remains the central to the tax administration and the effective tax implementation. Here comes the same transaction may have different implications, different consequences under two laws. One transaction may be perfectly, just remain, I'll just say next, just go back. A particular transaction may be perfectly acceptable under GST, but may be looked with suspicion under Income Tax Act and vice versa. And that is where the real controversy begins. The real conflict arises. Next. Before we go deeper into this, let us understand the DNA of both these important tax legislation, one indirect tax, another direct tax. We should understand that GST is a consumption-based indirect tax. It is also fondly described as destination-based consumption tax. Income tax, on the other hand, is a direct tax on the net earnings. It is an income tax on tax which taxes the profits. GST, on the other hand, like any other income indirect taxes, erstwhile excise service tax and customs, state level VAT, GST taxes the transactions. This fundamental feature of the indirect tax, that every indirect tax is a transaction-based tax, should always be kept in mind, because it always will cast its shadow on all the controversies and all the conflicts. And once we say that GST taxes the transactions, whereas income tax taxes the net earnings or profits to be computed annually at the end of the financial year, the reconciliation becomes inevitable. Next. When we talk about the interplay between these two legislations, please understand that the tax administration has been taking very rapid strides in checking the tax evasion and also for the effective tax administration and setting up a very robust, technology-driven, modern tax collection mechanism. They are far, far ahead
maybe of the taxpayers and even the tax professionals. What we are witnessing today is the real-time coordination between the authorities, the data mining using advanced technology, enhanced scrutiny and synchronization, and also simultaneously, from the taxpayer's perspective, the increased compliance burden. But what is important to be kept in mind is no longer these two diametrically opposite tax legislations and their administrators work in the silos. These two departments now no longer work in silos, and this should be kept in mind. There is a very real-time effective coordination between these two. दोनों के बीच में जिस तरह से सहकार से काम हो रहा है और एक जो गति से हो रहा है, जितनी जितनी स्पीड से हो रहा है, वो हमें हमेशा ख्याल में रखना है. टुडे कोई भी माहिती, कोई भी every information is now flowing seamlessly between GSTN, income tax systems, annual information system, banks and financial intelligence units. Seamlessly flow हो रही है, जिनका शायद हमें पता भी नहीं है. Next. So just to keep it in mind, what was earlier required surveys and searches to catch the tax avoidance or tax evasion is now available through analytics, through screen-based armchair analysis. पहले सर्वे सर्च पे ज्यादा ध्यान रहता था. अब the tax officer can do the analysis. It's an armchair analysis, just staring at the screen and analyzing the mindful of the data. Another important difference between the two, which actually characterizes these two taxes, or which also characterizes, which influences the consumers, the taxpayers' behavior, is GST is expected to be a burden on the final consumer. It's a multi-stage levy, which is a burden on the final consumer, or the consumer is expected to bear this burden, whereas income tax is a non-transferable tax burden. One law permits passing on the burden. If you cannot pass on, your liability remains. Taxpayer's liability remains. However, in principle, it allows the passing on of the burden, whereas another does not allow. This basic distinction between the two affects the valuation, accounting, and also the litigation strategy. Next. Again, the returns framework. GST, the various returns which are prescribed are monthly or quarterly, and to be at the end of the year, annual return in 9 along with the financial statement in the 9C. It's a transaction level tracking, whereas income tax में it's a financial, at the end of the financial year, annual return है, consolidated reporting होता है. However, and therefore, GST discrepancies may trigger income tax scrutiny. GST captures the each and every transaction, expected to capture each and every transaction in its monthly returns, and again at the end of the year annual return, which will again be captured in a different manner in the income tax returns, may even lead to the income tax scrutiny. GST works in real time because transaction takes place in real time. Income tax works annually. Next. And therefore, a monthly mismatch between the GST returns may ultimately become an income tax reassessment issue. Again, it becomes important why the reconciliation becomes important. The turnover reconciliation, कहाँ पे difference खड़ा होता है? GSTR 1 versus GSTR 3B, GSTR 1 and GSTR 3B versus ITR turnover, GSTR 9 9C versus audited financial years, GST data reflected in annual information system. ITR GST टर्नओवर कैप्चर्स करती है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कैप्चर्स करती है. तो टर्नओवर का जो मिसमैच है, that again becomes the starting point of most cross enforcement actions. दोनों साइड से. एक सिंपल यहां पे मैं एग्जांपल दूं.
आपको पता होगा कि सर्विस टैक्स में thousands and thousands of service tax notices were issued merely on the basis of the difference of the turnover based on the 26 AS और ITR versus the ST3 returns. दिसंबर 20 में कोविड के टाइम पे ये सारी नोटिस इश्यू हुई थी. उसकी लीगालिटी वैलिडिटी इज अ डिफरेंट मैटर, बट डिपार्टमेंट issued, this was going on even before that, but in 2020 it was on some different scale because across the country probably more than 70,000 notices were issued merely on the basis of 26 AS or ITR versus GST return. Contractors, वर्स कॉन्ट्रैक्टर्स जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में है, इवन हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, the foreign exchange dealers, even we lawyers have received the notices. We were also at the receiving end because the system doesn't recognize के who is the actually taxpayer. Taxpayer का प्रोफाइल क्या है? TDS कटा है, 26 AS है, उसके बेस पे नोटिस इश्यू हुई है. And you should not be surprised in GST also the very 26 AS or ITR may become the basis for the GST demands also. So turnover mismatch is probably the single biggest trigger point in cross enforcement. Next. Again, टर्नओवर के जो कंसेप्ट है दोनों लॉ में, दोनों टैक्स लेजिस्लेशन में, वो काफी डिफरेंट है. The income tax, the financials are based on GAAP. GST turnover is a statutory construct. Income tax turnover is basically an accounting construct. जीएसटी टर्नओवर में शेड्यूल 1 के ट्रांजैक्शन जो डीम्ड टर्नओवर है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं. क्रेडिट नोट फाइनेंशियल वर्सेस स्टेच्यूटरी की इंपैक्ट अलग है. अगर वो स्टेच्यूटरी क्रेडिट नोट है तो वो स्टेच्यूटरी रिटर्न में वो रिफ्लेक्ट होती है. अगर वो प्योर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है तो वो स्टेच्यूटरी रिटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं होती है. सेल ऑफ कैपिटल गुड्स की ट्रीटमेंट अलग है, डिस्काउंट ट्रीटमेंट अलग है. तो बेसिकली still GST turnover, you can say that it is still based on the notional concept. It's a notional turnover. It's a deemed turnover. Whereas income tax में जो turnover जो decide जो turnover जो determine होता है for the taxable purpose, for the return purpose, वो actual accounting principle पे accounting construct होता है वो. Next. The other distinctions are ITC versus expense reporting, particularly clause 44, which is probably one of the most important clause, जहां पे ITC रिवर्सल की आपको जो रिपोर्टिंग करनी होती है. ट्रीटमेंट ऑफ बेड डेब्ट्स, GST डज नॉट रिकॉग्नाइज द बेड डेब्ट्स. अगर सप्लायर को अपने बायर या आपके आपके क्लाइंट अगर आपको फीस नहीं देते हैं, सप्लायर को अगर अपनी जी सप्लाई के लिए कंसिडरेशन अगर नहीं देते हैं, ठीक है, सेक्शन 16(2) में जो सेकंड प्रोवाइजो में द बायर में बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द क्रेडिट, बट वो बेड डेब्ट्स की कहीं पे भी डिडक्शन नहीं मिलती है टर्नओवर में से. टैक्सेबिलिटी रिमेन्स. द बायर विल नॉट गेट द ITC, but the supplier's taxability remains. जॉब वर्क इम्प्लीकेशंस GST में अलग है और एक्साइज इनकम टैक्स में अलग है. GST प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट कि कहां पे इनकम जनरेट होती है. जो मैंने पहले कहा कि बेसिकली GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. So where the consumption takes place, there the situs of the tax lies, and therefore exports are always freed from the tax under GST regime, and imports are subjected to the reverse charge because it is a destination-based consumption tax. Income tax works on the accrual concept. Next, दोनों का collection mechanism, previous years versus assessment year, advance tax and self-assessment. GST taxes each supply. Every single transaction involving the taxable supply of the goods or services or both is liable to GST, subject to other conditions. But in normal case, every single transaction is liable to GST. Again, and this is very important,
There may be exemptions from the payment of GST on the particular supply of any particular goods or services. Those exemptions are not relevant for the income tax. The income derived receipts obtained from the exempted supply will have to be accounted for the purpose of income tax. So GST exemptions are not relevant for income tax. GST collects tax transaction by transaction. Income tax looks at the final financial result. Next. However, after briefly having a look at, after a brief look at all the distinction between these two tax legislations, the one common thread which is binding them, one common principle is that the business purpose test is recognized under both laws. Both ultimately examine the business conduct. The common principle, despite all the differences, one principle is under both the laws. Next. From this perspective, let us look at it. Suppose interest and late fee. Allowability under income tax. Income tax is, there is a Lakshman Das Mathura Das famous judgment. It is allowable under section 37(1) because it is compensatory in nature. Any interest charge on the delayed payment of the supply is required to be included in the taxable value for the purpose of GST section 15. It is treated as compensatory and therefore allowable deduction. It is to be included for the purpose of levy of GST. The fundamental distinction between the two, interest amount is the same when the interest is recovered. The other part, I mean, I'm not going into too many aspects of the interest. I'm just broadly laying down some proposition. Late fee. Late fee has been in the talk of late very much on the social media amongst the professionals because of the Madras High Court judgments that simultaneous penalty, general penalty under section 125 and late fee under section 47 is not permissible. Before we look at this, this principle, Madras High Court's judgment on this, how the penalty is late fee is treated under income tax. In Swadeshi Cotton Mills case, 1967 ITR 57, Supreme Court said if an amount which is paid which is partly in penal and partly in compensatory, the latter is allowed. There is a view that late fees for filing the TDS return or income tax return is an allowable expenditure, section 234E of the Income Tax Act. The late fee has been considered as a compensatory and therefore allowable deduction. If this is the view, and if late fee next, these are the judgments of Madras High Court and Ahmedabad High Court where they have taken the view that simultaneous imposition of penalty under section 125 of the CGST Act and late fee under section 47 is not permissible because late fee is also a penalty. Now here you see the conflict, here you see the friction. अगर लेट फी compensatory है, yeah, it is not allowable. अगर लेट फी अगर compensatory है, तो then income tax में allowable है. But then it cannot be claimed as a, one cannot challenge it waiver under GST Act. Because Madras High Court judgment के जो sum and substance है, that late fee is also like a penalty. If it is akin to penalty, then both under two for the same transaction, there can be double jeopardy. But I cannot claim late fee as a penalty to save the penalty under CGST Act and compensatory under the Income Tax Act. So running with the hare and hunting with the hound will not be possible here. And here arises the friction. I have some reservations about considering late fee as a penalty. It is a compensatory thing
it may be allowable in income tax, but it may not be a bar against levying simultaneously along with Section 125 general penalty under CGSTA. We may have some conflicting judgments on this in the coming days. Right now, the dominant view of the High Court is that late fee and penalty both is not permissible under CGSTX Section 47 and Section 125, but the friction will remain. Next. Payment to close proceedings. This is another issue, and this is from where we will be moving towards two major aspects on which I will be covering. That is fake purchases, fake billing, bogus purchases, and the turnover, suppression of turnover. Any payments made during investigation, audit, or alleged evasion, can it be claimed as a deduction? In KP Mechanical, Gujarat High Court, this was the case where the taxpayer had not paid the collected the service tax and not paid the service tax. During the investigation, it was pointed out he paid the service tax along with interest and penalty. This was claimed as a deduction under income tax. In this KP Mechanicals case, Gujarat High Court said that this is for the business purpose. The business purpose test was applied and the tax which was paid, it was allowed. So, investigation, audit, or alleged evasion, the judicial view, the deductibility under income tax, and again, it will all revolve around the facts of the case. But yes, this Gujarat High Court judgment does lay down some principle. Next. Reversal of ITC and blocked ITC. When ITC is claimed, obviously the purchases are always actually valued at the net of any credit benefit. Rebate, credits, earlier Senvet credit, now it is input tax credit. They never form part of the cost of purchase. But when I reverse the ITC, my again treatment under income tax can change. Similarly, if I have availed the blocked ITC, if I do not avail the block ITC, it will again have a repercussions under my cost, the cost of purchase for the purpose of P&L account. If I have availed by wrongly, if I avail the ITC under Section 17(5), which is blocked initially by oversight or by mistake, which I later on reverse, again, it can have the income tax implications. I'm not going too much detail into this. Next. The treatments of subsidies, reimbursement, discount, related party transactions, this which are basically the major bone of contentions even under GST laws, their treatments under income tax and GST are entirely different. And friends, ये जो माइक्रो लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, these are all the major factors कि जहाँ पे ITR टर्नओवर और GST टर्नओवर में मिसमैच होता है, जिसे हमें कंटिन्यूस रिकंसिलिएशन करना है. रिकंसिलिएशन कोई एनुअल एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए या फिर डिपार्टमेंटल ऑडिट के वक्त या स्क्रूटिनी के टाइम पे नहीं करनी है. रिकंसिलिएशन considering the complexities of the transactions, considering the complexities of the law itself, it is always advisable that the reconciliation between the GST record GST turnover and the income tax turnover may be undertaken at least quarterly, if not on monthly basis. It has to be a continuous exercise. This will again depend upon the profile of the taxpayer, but it is advisable. One should not take up the reconciliation when the differences or mismatch is pointed out by the department. This has to be a continuous exercise. Next. GST, government subsidy is excluded for the purpose of levy, but price link subsidy, any subsidy which is given, which has influenced the price, section 15 में आप देख लीजिए, which has influenced the price, then it will be taxable. Income tax में capital receipt, it is a capital receipt, then it is exempted. If it is a revenue receipt, it is a taxable. Now, the GST treats the subsidy
from the perspective of whether it is affecting the price or not, of the supply or not. Income tax does not look at it from that angle. Income tax look at it whether it is a capital receipt or whether it's a revenue receipt. This fundamental difference in looking at the subsidy and its tax treatment again creates the friction, again creates sometimes the mismatch between the two legislations. Next. Schedule 1 to CGST Act. There are 5 transactions which are deemed to be supply. Under Section 7(1), before a supply becomes taxable, कोई भी सप्लाई पे टैक्स लेवी तभी होगा जब एक it is for or in the course of business, furtherance of business, and 2, it is backed by the consideration. These are the twin conditions, basic fundamental twin conditions. In the course or furtherance of business, and second is consideration. However, legislature को power है और वो power को exercise करते हुए Schedule 1 में there are transactions where one of the conditions has been dispensed with, and that is relating to consideration. Schedule 1 में जो transactions है उसमें consideration न भी हो, then also they are deemed to be supply, and therefore the tax is levied. Related party transactions mainly between related person and distinct person. However, now these are deemed supply. GST will be payable on it. It will be reflected in the GST returns also. It has no relevance, actually, no implications from the income tax perspective. Because income tax does not actually recognize such deemed supply or income flowing or notional income flowing, consideration flowing from one end to another end under this deemed supply as an income at all. This is another very glaring distinction between the two, one major point of difference between the two. Next. GST, we have a time of supply. Income tax is an annual computation. This time of supply at times becomes a notional concept, which is to be applied in the facts of the case. And then one has to determine the taxability, when at what point of time my liability to pay tax arose. वो बेस पे मुझे करना है. इनकम टैक्स में ये इश्यू नहीं है, because the computation is undertaken on annual basis. And here both the timing difference है, that also becomes sometimes the major area of the dispute, particularly transactions which are undertaken at the fag end of the financial year. The reconciliation again becomes important. Next. So again, we come back to my earlier slide, same slide. These are certain glimpses, certain examples where same transactions with the differing tax statements, differing consequences under the two tax laws. Having briefly discussed this conceptual interplay, let us now move to the most contentious area, and that is of bogus purchase or fraudulent ITC. Next. This is basically, I can say that this is the one subject which is talk of the town and will remain so for a foreseeable future under GST. It has been there. Bogus purchase is not a novelty. No, it's not a novel thing which is happening under GST. The accommodation entries, call it accommodation entries, circular trading, paper transactions, all these have been there since decades under VAT and even under excise and service tax. When there was a moderate credit, when it was introduced in 1986, thereafter replaced by SENVAT concept, and then carried forward in the form of input tax credit under GST. What is important is the interplay between GST and income tax becomes extremely visible and aggressive in cases involving suspected non-genuine transactions. Because
the transactions which are claimed to be bogus purchase transactions by the GST authorities, or as a fraudulent ITC by the GST authorities, can have serious repercussions under income tax also, particularly after close coordination between the two tax authorities, two tax administrations. And we are witnessing this every day. In major cases where the amounts of fraudulent ITC alleged by the department is substantial, the income tax authorities also immediately sometimes swing into action and reopen the assessments. The next. The bogus purchases is basically the paper transaction without actual supply. In the European Union VAT, these are fondly called paper mills. They are mills who are actually printing the papers. Papers allowing the VAT deduction, what we call ITC, input tax credit. In the European VAT regime, it is known as VAT deductions. These are paper transactions. And there is nobody can dispute that the fake invoice economy has fundamentally altered the entire tax litigation. One would wonder the expected 5 lakh to 6 lakh appeals, which are likely to flood in the coming months, the GST tribunal. How many, the major portion, one should not be surprised, major portion would be of these fraudulent ITC cases, followed by cancellation of registration related issues and the e-way bill detention and confiscation. I've been always saying this, that invoice themselves have become tradable commodity, so much so that invoice has become the largest selling commodity in the country. It itself has become it is a tradable commodity, and it has become the largest selling commodity. And we are witnessing this every day. We are witnessing the cases unearthed by the department every day. Next. What could be the motivating factors for such paper transactions? Obviously, profit suppression, inflated turnover, case generation, refund frauds, as they are known as carousel frauds, and also the arranging the finance from the banks and financial institutions by inflating the turnover. These are certain standard motivating factors which, influence the taxpayers to undertake such paper transactions. Next. The fraud mechanism, I'm sure all of you must be aware. Fake invoices, non-existent suppliers, return defaulters, and fraud in supply chain. These are the standard route. Invoices are generated. ITC is allowed to be passed on this without any supply of goods or services. The buyer takes the credit. On paper, everything is fine, but without underlying supply of goods or services. The invoices are generated from the non-existent suppliers who are actually on paper only existing. There could be transactions, either paper transactions, or there could be transactions involving actual supplies, but where the returns are not filed by the suppliers. In paper transactions, sometimes the returns are filed, taxes are paid on paper. In many cases, the suppliers then vanish from the chain without filing the returns also. Again, there is a fraud in supply chain whereby A to B to C, and I'm sure you must be all aware, the department can go right up to level 6. A has purchased from B, B to C, B has purchased from C, C from D, D from E, E from F. Department can track nearly 6 layers of the supply chain where the transaction could be tested, can be examined for its genuineness. The
And these are the standard mechanism which every tax practitioner is familiar with. Next. The issue is, and in terms of section 16.2 lays down various conditions, originally 4 conditions, after subsequent amendment 6 conditions, which are to be cumulatively satisfied to claim the ITC as a eligible ITC or the admissible ITC. These all conditions are cumulative. They are not independent. They are to be simultaneously complied with. The question here is the friction, the battle is between the default on the part of the supplier and the compliance burden on part of the recipient. Is the recipient expected to ensure the supplier's honesty? This is the moot question. A recipient has genuinely undertaken the transaction. A recipient has received the supplies of goods or services reflected in the invoice. He has paid the tax also. He has accounted for that supplies in the books of accounts. He has filed the returns also. And however, the supplier defaults or supplier defrauds the government and the recipient, his buyer also. Where does the recipient go? That is the moot question. To what extent a recipient suffer for the supplier's default? Next. And these are the questions: genuineness at the inception, compliance by recipient, retrospective cancellation, large number of cases on the denial of ITC to the recipient on the retrospective cancellation, GSTR 2A versus GSTR 3B mismatch. These are all the issues which are the questions which make the answers. Next. And as I said, in my series of articles which I wrote in Tax India Online under this heading, it was a 4-part series: supplier sins, recipient repents. Next. Now we come to the income tax angle. The questions which arise, let us assume that there is a demand towards the ITC availed by the recipient taxpayer on the ground that either the supplier was found to be non-genuine taxpayer, or he has defaulted in the return, or he has actually availed the fraudulent ITC from his suppliers and which was actually used for the payment of tax to the recipient in concern, or he has not paid the tax. When we come to the bogus survey, where the department allegation is that the transactions are bogus without supply of goods or services, can these proceedings be used by the income tax authorities straightway for initiating the inquiry against the taxpayer and also alleging the bogus purchases and set in motion the demand for by additions? This is the question. Is there a need for independent inquiry? Whether borrowed satisfaction is permissible. Here, borrowed satisfaction from the GST authorities. Whether, if this is a case of bogus purchases, whether entire purchases can be disallowed or only partial disallowance is to be made to the extent of the gross profit margin, keeping the gross profit margin intact. What if the sales are accepted? Can the bogus purchases be denied? What would be the impact? If the sales are accepted, can it be said that the purchases cannot be, disputed? These are certain questions which need to be looked at in the income tax perspective when the demand arises for the denial of ITC on the ground of bogus purchases or paper transactions under GST. Next. First, in NK Industries, Shoreline, this is no Shoreline, sorry, it is Shoreline Hotels, Kachwala Gems, and certain judgments. NK Industries SLP was dismissed in NK Proteins. All the citations are there at the end of this side. There are all the judicial pronouncements which I am right now referring to
वो ये पूरे स्लाइड पीपीटी में लास्ट में पूरे दिए हुए हैं मैंने विद द साइटेशंस. हियर the view has been entire purchases may be disallowed if the purchases are actually established to be bogus. और यहां पे हमें सावधान रहना है. प्लीज अंडरस्टैंड. अब जो भी बात मैं कर रहा हूं अभी, दैट समटाइम वो ये एंगल से कर रहा हूं, हमें अलर्ट रहना है कि हम जब जीएसटी की ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन के या सर्च या रेड स्क्रूटिनी के टाइम पे हम ये पेपर ट्रांजेक्शन्स पे जो आईटीसी की डिमांड को कभी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके रिपरकशंस हमें इनकम टैक्स के एंगल से भी ध्यान में रख के करना है. इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ सो कॉल्ड बाइंग द पीस. आई डोंट लाइक दिस फ्रेज बाइंग द पीस. यू नेवर बाई द पीस, यू ऑलवेज बाई द ट्रबल. हम कभी ये समझ के कि चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं, आईटीसी रिवर्स कर लेते हैं, बट उस समय हमें सावधान रहना है कि इसके इनकम टैक्स रिपरकशंस क्या हो सकते हैं. Because in all these judgments, next, there are few other judgments also, notably Bombay High Court Kanak impacts, Drishti impacts, जिसके citations मैंने बाद में दिए हुए हैं कि if the bogus purchases are established, then without any justifiable explanation, then the entire purchases can also be disallowed. There is no question of partial disallowance under section 69C of the Income Tax Act. तो उस समय हमें डिफेंस जो खड़ा करना है जीएसटी में, हम जीएसटी से इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स से जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं. हेलो कंट्रोल रूम प्लीज चेक, वॉइस नहीं आ रही है. हेलो, कैन am I शैलेश. yeah, am I यस audible यस शैलेश. यस शैलेश, यू आर ऑडिबल. now? तो इस समय whether the taxpayer accepts the bogus purchases or not, एक एविडेंसरी चेन खड़ी करना बहुत ही महत्व का हो जाता है. पहली बात तो यह है, whatever may be the circumstances, at no point of time the ITC should be reverse simpliciter even when you are closing the proceeding under section 73(9), 73(5) और 74(5). DRC 03 में जब आप पेमेंट करते हो तो एक नोट नीचे लिख सकते हो आप, भले अंडर प्रोटेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है, आपको ये नोट जरूर लिखना है कि द आईटीसी इज बीइंग रिवर्स पेड without prejudice to our rights or contentions regarding the admissibility of the ITC. बाद में आप फाइट करो या ना करो, this will help in income tax कि you have not accepted the demand under GST simpliciter. आपने बोगस परचेस ट्रांजेक्शंस को simpliciter एक्सेप्ट नहीं किया है. So if the income tax authorities move on that basis,
the it will be, I mean, there will be a footing to fight it out. In other cases, where the taxpayer says कि मेरे supplier ने कुछ भी किया हो, but my transactions are genuine, then the evidence is documentary evidence is chain has to be established from the beginning, and that is movement of goods, उसकी documentary tell, banking channel, stock records. Next. Next. आपके परचेस ऑर्डर्स और अगर हो तो परचेस ऑर्डर्स जो सप्लायर पे आपने रखा हो, टैक्स इनवॉइसेस, ई-वे बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, लेजर रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट. लोरी रिसिप्ट्स, अगर फास्टैग के चलन हो तो फास्टैग के, पेमेंट स्लिप अगर सप्लायर ने भी इश्यू किया है तो, और रिसिपिएंट के पास जब मटेरियल आती है, बल्क मटेरियल जब होती है तो वो पेमेंट स्लिप्स, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट्स, देन स्टॉक रजिस्टर. स्टॉक रजिस्टर में 3 प्रकार के होते हैं. एक मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर जो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होता है, देन मटेरियल इश्यू नोट जो स्टोर हमेशा शॉप फ्लोर को इश्यू करती है, प्रोडक्शन रजिस्टर, एंड फाइनली द रिमूवल और द सेल्स रजिस्टर, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल ऑफ द मैन्युफैक्चरर. मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ. फार्मा के रिकॉर्ड, फार्मा में मेटिकुलसली रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं. तो वो रिकॉर्ड्स कैन बी वेरी हैंडी फॉर फाइटिंग that as far as the recipient is concerned, he has complied with all the requirements of law. Next. Supplier's affidavit in a given case. There is no immediate cash withdrawal. अगर डिपार्टमेंट ये बोगस परचेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इनकम टैक्स, आई विल कम टू दिस शॉर्टली, कि अगर ये बोगस परचेज है तो बेसिकली वो हवाला ट्रांजेक्शन हो जाते हैं कि चेक दिया और इमीडिएटली कैश विड्रॉल हुआ है. Your participation in proceedings can also be important from the income tax point of view. Cross-examination, correlation with sales. I'm coming to this because these are all major from income tax point of view. Important point ये है कि जो डिफेंस के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देने हैं वो आपको फर्स्ट स्टेज एजुडिकेशन में ही देने हैं. उसको आपको अपील के लिए बाकी नहीं रखने हैं. नाउ जीएसटी में 3 स्टेज होते हैं नॉर्मली. एक सेक्शन 61 में ASMT 10, सेकंड मे बी फॉलोड बाय DRC 01A, एंड देयर आफ्टर बाय सोकोस नोटिस अलोंग विद समरी ऑफ द नोटिस इन DRC 01. DRC 01 सोकोस नोटिस नहीं है. DRC 01 इज अ समरी ऑफ द सोकोस नोटिस. अ फॉर्मल डिटेल सोकोस नोटिस इज नॉट इन एनी प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा. हमें ये मिसकंसेप्शन है, हम सोकोस नोटिस को DRC 01 DRC 01 मान के चलते हैं. दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल मिसकंसेप्शन. आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना हाईकोर्ट के NK सर्विसेज से लेके सारे जजमेंट देख लीजिए, इवन गोदावरी कमोडिटीज एंड अदर जजमेंट्स. DRC 01 is not a notice. It is not a substitute for the SOCOS notice. It is a appendage. It is an annexure to the SOCOS notice. It is summary. DRC 07 is not an order. It is a summary of the order. ये बात हमें ख्याल में रखनी है. DRC 07 आपको ऑनलाइन अपील करने के लिए आपको फैसिलिटेट करती है. APL 04 is not an order in appeal. APL 04 is merely a summary of the order जो आपको ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए फैसिलिटेट करती है. DRC 07 आपको ऑनलाइन रिप्लाई दाखिल करने के लिए फैसिलिटेट करती है. तो ASMT 10 DRC 01A वो समय पे भी अगर ये ग्राउंड जो वहां से शुरुआत होती है या फिर DGGI की कोई रेड हुई हो, इंक्वायरी हुई हो, एंटी इवेजन की इंक्वायरी होती हो, प्रिवेंटिव की इंक्वायरी हो सकती है, वो सब समय जब जब डिनायल ऑफ ITC ऑन द ग्राउंड ऑफ बोगस परचेस कि आपकी परचेस इज बोगस है, आपने फ्रॉडुलेंट क्रेडिट लिए है, तो उस समय आपको ये जो सारे एविडेंसेस देने हैं वो एविडेंसेस उसी समय से आपको रिकॉर्ड पे रखने हैं. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन ASMT 10 एंड DRC 01 स्टेज पे. आपको सारा डिफेंस आपको हाइड नहीं करना है, लेकिन सारा डिफेंस आपको वहां पे रिवील भी नहीं करना है, बिकॉज वॉट यू डू नॉट एक्सेप्ट विल बी फॉलोड बाय सोकोस नोटिस. अगर आप आपका सारा डिफेंस अगर रिवील कर देते हो तो सोकोस नोटिस में आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, बिकॉज उसने ASMT 11 में आपके रिप्लाई को
या DRC 01A पार्ट बी में आपके रिप्लाई को खारिज कर दिया है। In one sentence, they are not acceptable, they are not found to be satisfactory. So you have to be very careful, but it does not mean कि available documentary evidence आपको नहीं रखने हैं। तो ये सारे evidences, he is not going to look at it. You don't worry about that. In indirect tax, my experience, the only one principle I keep it in mind while fighting a litigation, while handling a litigation is every single case starting from so cause notice, I am fighting for losing the case. I only keep the tribunal in mind, High Court in mind. I rarely go to High Court. I don't like High Court. I go to the High Court only as a last resort. But whether my client will get the justice in tribunal, is the case is good for justice in tribunal. नीचे के दो जो स्टेज है, एजुडिकेशन और कमिश्नर अपील, वो मेरे लिए एक न्यूसेंस है, मुझे करना है क्योंकि लॉ रिक्वायर्स मी टू पास थ्रू दो स्टेजेस, बट देर इज नो शॉर्टकट इन द डिफेंस एट द फर्स्ट स्टेज। ये सारे एविडेंसेस आपको रखने हैं। आप इकोम जिल देख लीजिए और सीरीज ऑफ जजमेंट विच आई हैव साइटेड एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, गार्गो, सनक्रा, LGW, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सानिया ट्रेडर्स, सिंगाल आयन ट्रेडर्स, द लेटेस्ट जजमेंट इन मेटल सिंडिकेट, कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट, ये जो सारे जजमेंट्स जो सारे हैं उसमें थ्रस्ट यही है दैट ऑफिसर हैज टू लुक एट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको रखने हैं। एंड ये कमिंग टू नेक्स्ट, जो जुडिशियल सपोर्ट है, वी नाउ कम टू these are the cases which I am now talking about are all under income tax. सापुरजी पानंद जी is one of the most important case, ये केस में सुप्रीम कोर्ट के, और यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बोगस परचेसिस, इट इज 2020 to 288 टैक्स में 661, एंड द बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को ये केस में सापुरजी पानंद जी में अपील किया था that one, no addition on mere suspicion and there is a necessity for independent inquiry. सापुरजी पानंद जी में बोगस परचेसिस का पूरा केस वेट ऑथोरिटीज के रिपोर्ट पे बना हुआ था अंडर इनकम टैक्स विदाउट एनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। Similar is the law, what the courts held in Nikun Yaksim and Mohammad Haji Adam. One of the, I mean, these are two also famous cases. That simpliciter on the GST authorities' proceedings, income tax authorities cannot base their allegations and allege the bogus purchases against the party. They have to undertake the independent investigation also. Next. Similarly, when we talk about retrospective cancellation, this is not decisive. Shanti Kiran India Supreme Court, Delhi वेट का जजमेंट, LGW जजमेंट, कलकत्ता हाई कोर्ट। The next, there are series of judgments on this. Supplier default. If the supplier does not pay, can the buyer be disallowed the credit? No doubt, conflicting judgments है, इश्यू ऊपर है अभी सुप्रीम कोर्ट में, बट एराइज इंडिया, ऑनक्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग, नेक्स्ट। तो ये जो सारे जजमेंट है उसमें आई कम बैक टू द जजमेंट, सर्टेन जजमेंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट द अंडर इनकम GST के वेयर द लॉ इज आइदर स्टिल इन द फ्लूइड स्टेट और वेयर द कोर्ट्स हैव वेरी फर्मली रूल्ड दैट इट कैन नॉट बी डिसअलाउड, ITC कैन नॉट बी डिसअलाउड। लाइक केरला हाई कोर्ट के ये सारे जजमेंट, दिया एजेंसीज, राजू जोसेफ, गोपाल दास नायर एंड इना मेडिकल्स, 2A वर्सेस 3B। 2A वर्सेस 3B में फ्रेंड्स आई हैव बीन सीइंग, यहाँ पे मैं थोड़ी 2-4 मिनट लेना चाहूंगा। पहली बात तो अभी तो 2B आ गया, बट thousands of cases have been booked by the department on the basis of the mismatch between 2A versus 3B। अब बात क्या होती है, हम जब GST और इनकम टैक्स की बात करते हैं, जब आपके 2A और 3B के बीच में मिसमैच ITC में होता है, और वो ITC जब डिपार्टमेंट एलेज करती है कि आपने एक्सेस ITC ली हुई है, वो जब डिपार्टमेंट एलेज करती है तो उनके इनकम टैक्स रिपरकशंस दो तरीके से होते हैं। वो LA एक्सेस ITC की PNL अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपैक्ट होगी,
और डिपार्टमेंट आईटीसी इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या उसको बोगस परचेस गिनेगी। ये दो रिपरकशंस इमीडिएटली हो जाते हैं। इट डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू मियरली 2A वर्सेस 3B आईटीसी डिस्प्यूट, इट कैन बिकम एन इनकम टैक्स डिस्प्यूट। नाउ 2A वर्सेस 3B में my stand is very clear. I have been very clear in taking this view. One, it cannot be a simpliciter a ground to allow to allege the excess availment of ITC for number of reasons. One, 2A is a dynamic statement. It is not a static statement. My supplier initially may not have paid, his invoice is not reflected, but he may have paid the tax at a later point of time. That brings the main question. एक्सेस आईटीसी जो अवेलमेंट डिपार्टमेंट एलेज कर रही है, उनमें जो ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व है, वो ट्रांजेक्शन रिकंसाइल करके मुझे ढूंढने हैं या डिपार्टमेंट को मुझे ढूंढ के देने हैं? दिस इज द क्वेश्चन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द डिपार्टमेंट एंड नॉट ऑन द टैक्स पेयर। लॉ डज नॉट अलाउ सच ग्रोसिंग अप ऑफ द क्रेडिट एंड देन फाइंड आउट द डिफरेंस कि 2A में 1 करोड़ की क्रेडिट दिख रही है, 3B में 1.5 करोड़ की दिख रही है, तो आपने 3B में 50 लाख की क्रेडिट एक्सेस ली है। यस, दिस इज ए एक्सेस अवेलमेंट ऑन पेपर। हावेवर, वो 50 लाख की एक्सेस क्रेडिट में कौन से सप्लायर्स इन्वॉल्व है और कौन से ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व है, वो इंफॉर्मेशन, वो डिटेल्स देने की जवाबदारी डिपार्टमेंट की है, टैक्स पेयर की फाइंड आउट करने की नहीं है। और यहाँ पे काफी डिफेंस लोग अपने आप पे ये जवाबदारी ले लेते हैं। Law does not allow, GST law does not allow such grossing up of the credit and then find out the difference. Why? Because GST is a transaction based tax, जो मैंने पहले कहा था. The fundamental character of GST as an indirect tax being the transaction based tax यहाँ पे forefront पे आ जाता है. Every single transaction creates rights and liabilities vis-a-vis the parties, department as well as the taxpayer. मेरा right है कि ये transaction मेरा सही है. डिपार्टमेंट की जवाबदारी है, ऑब्लिगेशन है अंडर द लॉ कि वो कहे कि वो प्रूव करे कि ये ट्रांजेक्शन सही नहीं है। वो सिंपलीसिटर ये 50 लाख और 75 लाख के डिफरेंस में 25 लाख की क्रेडिट को एलेज नहीं कर सकते हैं। तो ये जवाबदारी उनको यस, मैं मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये डिफरेंस को मैं रिकंसाइल करने की कोशिश करूं, सप्लायर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, दैट्स ए डिफरेंट मैटर, दैट इज माय बेबी। बट डिपार्टमेंट कैन नॉट सिंपली एलेज एंड देन पुट द बर्डन ऑन मी कि अभी आप डिफरेंस फाइंड आउट करिए और आप सप्लायर को फाइंड आउट करिए। ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस आई हैव कम अक्रॉस दैट पीपल हैव टेकन अपॉन देमसेल्व्स टू डू द रिकंसिलिएशन एंड फाइंड आउट द सप्लायर्स। 2A डज नॉट से, 2A रिटर्न भी नहीं है, 2A स्टेटमेंट है, वो जो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट है, वो तो टैक्स पेयर भी फाइल नहीं करते हैं। वेर इज द क्वेश्चन ऑफ टैक्स पेयर टेकिंग अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट द रिकंसिलिएशन? आपका राइट है, जब आपके पर डिमांड 2A वर्सेस 3B में आती है तो आप इसमें कौन से ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है वो डिटेल्स डिपार्टमेंट से आपको फर्स्ट मांगनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट डिफेंस यू हैव टू टेक एंड दे विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज उनको 2A से डिटेल्स नहीं मिलती है। फॉर दैट दे विल हैव टू आस्क फॉर द परचेस लेजर्स फ्रॉम यू। वो लेजर की स्क्रूटिनी उनको करनी होगी कि आप में कौन से इनवॉइसेस अंदर इन्वॉल्व है और कौन से इनवॉइसेस आपके 2A में नहीं दिख रहे हैं। वो एक्सरसाइज डिपार्टमेंट को करनी नहीं है, क्योंकि उनके पास उसके टाइम भी नहीं है, उनका इंटेंशन भी नहीं है, इसलिए वो सीधा एलेज कर देते हैं ब्लॉक क्रेडिट के बेस पे। दूसरी बात यह है कि जो जो देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ रीजंस व्हाई द सप्लायर्स इनवॉइस मे नॉट बी रिफ्लेक्टेड, may not be reflected, right? Coming to next 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 नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, एडवर्स केसेस जहां पे कोर्ट्स हैव गॉन अगेंस्ट द टैक्स पेयर्स बोथ अंडर जीएसटी एज वेल एज अंडर इनकम टैक्स, where the movement of goods could not be established, the transactions were proved to be fictitious. These are the cases: Shiv Trading, Trends Online, Trendship Online. All these citations are at the end of my PPT. Next.
सर आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन। हमने Yes. एक अभी हमने एक पोल रेस किया है अभी टू आस्क कि थोड़ा सा लेट हो गया था, सो वेबिनार विल गो अप टू 6:30. So Yeah. 94% of the participants are ready to be here till 6:30. So you Sir, can your continue convenience. till I'm 6:30. grateful to the participants for their warm response. I can go and They on are till you faint on your chair. so we have just got the response. 95% are saying yes, they are ready Yeah. till I'm 6:30. yeah. Great. Okay. So Thank we you. will try to close wind up before by 6:30, sir. And Okay. sir, if you allow, we can take Q&A also. Yeah. What I'm trying to do The is last I'm 5 minutes. completing this in another 10-15 minutes. Yes. Okay. Slides are 62, but they are all Yes. judgments. Slides are Done. 62. I'll try to complete it in 10-15 minutes, then we can take the question Done. answers. Great. Friends, you please ready with your questions to all the participants. We can take your questions after sir end his Yeah. deliberation. Thank you very much. Okay. Please continue, So sir. the sum and substance is this, friends. Come to slide number 41. You know, uh, I'll come to this also next. Next slide, please. Next slide. We'll come to this slide later on. Just take the my judgment slide. Next. Yes. I now very quickly I will glance through the. I will just talk about the judgment. जैसे मैंने कहा, Lakshman Das Mathura Das was on the interest which is deductible. Swadeshi Cotton Mills, if it is a penal, to the extent penal not deductible for under income tax, compensatory deductible. KP Mechanical, service tax was paid during investigation and this was allowed to be deducted from the income tax perspective. Next. Here, these are the judgments where the courts have held that once the bogus purchases are actually established and the taxpayer is unable to justify or rebut the allegation, then there is no leeway available to any authorities, including income tax tribunal, to allow the partial disallowance, to effect only partial disallowance. These are the judgments. Next. These are all the judgments on the same line. The latest one is by the Bombay High Court in Karnak Impacts, where the High Court, no doubt it was an unrepresented case, unfortunately, but I actually appeal to all of you. Karnak Impacts एक बार डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा. Next. Again, Drisha Impacts is on the same line. इकोम झील में जो कर्नाटका वेट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, विच डिपार्टमेंट इज साइटिंग प्रैक्टिकली इन एवरी केसेस ऑफ एनजीटीपी एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी, दैट इज वेयर द डिग्री ऑफ प्रूफ. अगर आप जजमेंट जो ध्यान से पढ़े तो देर वन विल गेट एन आइडिया बेसिकली कि what is the degree of proof expected from the taxpayer while disputing or challenging the department's allegation of the bogus purchases. The documentary supporting documentary evidences can vary from case to case. It can vary, but there is no shortcut in that defense. You have to give your everything to the at the first stage available only. उसी समय देना है आपको. The latest judgment is of the income tax is of the INVT Electric India Private Limited. In this case, the bogus purchase claim was based on the third party information. There are two important principles, followed by ITAT. The entire demand was raised by the income tax authorities. Additions were made based on the third party information, which was negatived by the tribunal. And secondly, tribunal considered the evidentiary support, the evidences which were laid on record by the department, by the party, sorry, the respondent, and based on that, the verdict went into the favor of the respondent company. It was a case involving the 9.90 crore edition. Entire edition was deleted. This is the judgment, which is a very latest judgment, 7/4/2026, ITO versus INVT Electric India Private Limited. Next. In again,
if there is no immediate cash withdrawal immediately after the payment, the fraudulent ITC cases में पेमेंट होती है, हवाला ट्रांजैक्शंस होते हैं, immediately cash withdrawal हो जाती है, केस दे देते हैं. Now, if there is no cash withdrawal immediately after the payment, considering the facts of the case, in Sri Ganesh developers, it was considered a mitigating factor in the income tax case. These are all income tax cases. Okay, there was no cash withdrawal. Then, if the cooperation shown by the parties during investigation, during the proceedings, that has also been shown as a mitigating factor. This has been considered as one of the redeeming factor by the high courts in this Maman International case. In similarly, Nikunj Exim, Chawla Interbill, Jagdish Thakur, these are all okay, where the parties' participation, parties has not been evasive, parties has not been actually avoiding giving the documentary supports, party has been absconding. These are all actually the factors, your participation, your level of participation, your involvement in the investigation is also one of the major factors to be kept in mind. Next. Cross-examination. When the case entirely is based on third-party information, friends, cross-examination becomes crucial with the clear understanding that cross-examination will never be granted by the department. But you have to put your right on that paper. When शोकॉस नोटिस आती है और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पे पर्टिकुलरली वेट अथॉरिटीज हरे वो उनको फोल्डर कहते हैं, सप्लायर के फोल्डर होते हैं, दे रिलाई अपॉन दिस फोल्डर while adjudicating the case. 9 out of 10 cases which I have witnessed, the cases which I am fighting, कि वो दो फोल्डर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कभी भी सेक्शन 61 की नोटिस में या DRC 01A में या शोकॉस नोटिस में होती ही नहीं है. दे नेवर डाइवर्ज दैट इंफॉर्मेशन. दे खाली लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द CGST ऑथोरिटीज. CGST authorities लिखती है on the basis of the report received from the state authorities report. आपको ये सारे रिपोर्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द एलिगेशन फॉर द डिनायल ऑफ द ITC आपको उसी समय मांगने हैं. ये आपका राइट है, टैक्स पेयर का राइट है. Whether they provide or do not provide, you have to ask for everything. Another thing you have to ask for is the suppliers who are, and these are the cases where I am saying where the party is claiming that my transactions are genuine and I have as a recipient complied with the law. एक बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, एज अ टैक्स प्रोफेशनल्स, आपके ट्रांजेक्शंस आई मीन द टैक्स पेयर के ट्रांजेक्शन बोगस है, मियर एकोमोडेशन एंट्री से सिर्फ एडजस्टमेंट है, वो टैक्स पेयर के बिना कोई नहीं जानता है. आपके क्लाइंट समझते हैं कि उन्होंने क्या किया है. तो पहले आपको क्लाइंट को यह पूछना है कि भाई एग्जैक्टली व्हाट इज द फैक्चुअल पोजीशन. योर डिफेंस स्ट्रेटेजी शुड डिपेंड अपॉन दैट. There is no point in going on fighting and fighting and fighting, and there is no point in reversing or paying the ITC just like that. आपको ये नहीं करना है, ये नी जर्क रिएक्शन नहीं देना है. क्लाइंट को पूछना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द फैक्चुअल पोजीशन, व्हाट इज द सिनेरियो. अगर क्लाइंट ये कहे कि सर ये एडजस्टमेंट है, रीजंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, डैमेज इज डन, तो आपको हो सकता है आपको डैमेज कंट्रोल करना पड़े. सो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लाइंट ही आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो शायद आप गलत डिफेंस ऑप्शन शायद चुन लो, दैट इज पॉसिबल. तो ये हमें ध्यान. नाउ कमिंग टू द डिफेंस पार्ट, आपको ये कहना, बिकॉज दिस आर ऑल गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनकम टैक्स ऑल्सो. You have to demand all the reports and other information based on which GST authorities have moved, because that very proceedings can be used by the income tax authorities also. Second is कि आपको सप्लायर के सामने क्या एक्शन ली है. अगर उनका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द ग्राउंड टू डिनाई द क्रेडिट, so sometimes in the notice you will not find the actual date of cancellation and the effective date of cancellation. Sometimes they give, तो आप पोर्टल पे जाके सब फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं है. भले आपको मिल जाएगी वो, बट आपको ऑफिशियली डिपार्टमेंट को लिखना है कि प्लीज प्रोवाइड अस दिस डिटेल्स, व्हाट इज द एक्चुअल डेट ऑफ कैंसिलेशन, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन.
उसके बाद आपको ये कहना है कि अगर ये सप्लायर फ्रॉडुलेंट है, सप्लायर के सामने तीन केस प्रकार के हो सकते हैं जिसे रिसिपिएंट को दुविधा हो सकती है। सप्लायर ने टैक्स कलेक्ट किया है, टैक्स नहीं भरा है, सप्लायर ने बोगस ट्रांजैक्शन किया है, और सप्लायर ने खुद फ्रॉडुलेंट क्रेडिट जनरेट करके उसी को यूटिलाइज करके टैक्स भर के अपने रिसिपिएंट को, बायर को सप्लाई किया हुआ है। द टैक्स इज पेड आउट ऑफ फ्रॉडुलेंटली जनरेटेड क्रेडिट। ये तीनों केस में इट इज द रिसिपिएंट टैक्स पेयर राइट टू आस्क द डिपार्टमेंट एट द सोकोस नोटिस स्टेज इटसेल्फ कि वेदर एनी एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट सप्लायर अंडर सेक्शन 46 और सेक्शन 73 और 74 और नोट। इफ यस, what is the status of that case, whether at what stage you can ask officially, legally it is your right and you must ask. यू शुड ऑल्सो आस्क। हम वाईएस बेथेल मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को तो साइट करते हैं, एक पॉइंट हम भूल गए कि वाईएस बेथेल में सप्लायर्स वेर एक्चुअली एब्सकॉन्डिंग एंड बायर हैड आस्क्ड फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द सप्लायर। इट वाज ए यूनिलेटरल एक्शन अगेंस्ट द बायर विच मद्रास हाईकोर्ट डिड नॉट एक्चुअली अप्रूव। तो सप्लायर के रेंज सुपरिंटेंडेंट की भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन मांग सकते हो इन अ गिवन केस। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन सुपरिंटेंडेंट ने जिसने किया है कौन से ग्राउंड पे किया है सप्लायर का, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मांगने के, और आपको उसी समय मांगना है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जस्ट गो प्रीवियस स्लाइड प्लीज। कोरिलेशन बिटवीन द परचेस एंड सेल्स ट्रांजेक्शन। आपको एक सिंपल सा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पर्टिकुलरली फार्मा में और फेरस नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे स्क्रैप है, वन ऑफ द मेजर एरिया ऑफ द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इज ऑब्वियसली द स्क्रैप बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे स्क्रैप में से एमएस इनगट बनते हैं, बिलेट बनती है, इनगट में से सीटीडी बार, रोल प्रोडक्ट, री रोल प्रोडक्ट्स बनते हैं, बार, पाइप्स, ये सलिया वगैरह। तो ये जो सारे जो फ्लेट है और शीट्स है, सीटीडी बार, टीएमटी बार, नाउ दिस इज वन ऑफ द मेजर industries which is always under the department watch. I have been dealing with this industry for last 30 years. I know what are the pain points and what are the issues. अब डिपार्टमेंट ये कहती है कि स्क्रैप के सप्लायर आपके जेन्युइन नहीं है। जनरली द स्क्रैप में से इनगट का जो इनपुट आउटपुट रेशियो होता है वो जनरली 109, लोग 190 दिखाते हैं, ये स्टैंडर्ड है। 10% प्रोसेसिंग लॉस होता है, दी मेल्टिंग लॉस होता है, और डिपार्टमेंट भी नेवर बोदर्स अबाउट दिस। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, अगर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम डिपार्टमेंट का ये एलिगेशन है कि आपके सप्लायर ने आपको स्क्रैप सप्लाई नहीं किया है, सिर्फ आपके पास पेपर क्रेडिट आई है, और रिसिपिएंट ये कह रहा है कि देखिए मेरे पास ये ईवे बिल है, मेरे पास ये पेमेंट स्लिप है, ईवे बिल में जो ट्रक है वो कोई टू व्हीलर या थ्री व्हीलर नहीं है, वो कोई बस या कार नहीं है, वो एक्चुअल ट्रक है, उसके पास पेमेंट स्लिप है, फास्टैग है, अगर हो तो ठीक है, बिना फास्टैग इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। अगर फास्टैग नहीं है तो ट्रांजैक्शन को बोगस नहीं कहा जा सकता है मद्रास हाईकोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के हिसाब से। तो ईवे बिल भी ना हो तो भी, अगर ईवे बिल भी ना हो तो दैट इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस कि भाई ट्रांजैक्शन इज बोगस मद्रास हाईकोर्ट। द क्वेश्चन हियर इज, फिर उसमें से मेल्टिंग में गया, इनगोट बना, अगर मैं ये क्वांटिटी जो स्क्रैप मेरे पास आई नहीं है, बायर के पास नहीं आई है, जो डिपार्टमेंट का कहना है, अगर वो क्वांटिटी को मैं हटा दूं तो जितनी क्वांटिटी मेरी रिकॉर्डेड है, अनडिस्प्यूटेड है, और उसमें से जितने इनगट मैंने बनाए हुए हैं, क्या मैं वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता था? दैट इज द पॉइंट, इनपुट आउटपुट रेशियो। तो यहाँ पे परचेस एंड सेल, भाई परचेस एंड सेल्स के ट्रांजेक्शन में वन टू वन कोरिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। देर इज नो वन टू वन कोरिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट अंडर द आईटीसी स्कीम। इट वाज नेवर देयर अंडर सैनवेट क्रेडिट स्कीम, इट वाज नेवर देयर अंडर मॉडरेट स्कीम एक्सेप्ट इन द फर्स्ट ईयर। सो आपको ये इनपुट आउटपुट रेशियो का भी इन अ गिवन केस आप डिफेंस ले सकते हो। इट कैन बी वन ऑफ द मेजर डिफेंस बिकॉज दिस डिफेंस इटसेल्फ विल सर्व योर पर्पस इन केस द इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑल्सो मूव ऑन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट का ये केस नहीं है कि आपने दूसरे अनडिस्क्लोज सोर्सेज से मटेरियल लाए हो आप, और आपने उसमें से मटेरियल बनाया हुआ है, और डिपार्टमेंट स्टॉप हो जाती है कि भाई आपके पास ये मटेरियल आया नहीं है, तो आपका इनपुट आउटपुट रेशियो और एक्चुअल प्रोडक्शन जो आपके रिकॉर्ड के हिसाब से हो रहा है, जिसके पर आपके बायर ने टैक्स भरा हुआ है, रिसिपिएंट टैक्स पेयर ने टैक्स भरा हुआ है फिनिश गुड्स पे, दैट बिकम्स वन इम्पोर्टेंट
point of defense both for GST and for the income tax. Next. Retrospective or prospective cancellation. There are series of judgments on this. Series of judgment. In last 7 days, probably another 4 to 5 judgments of and only Madras High Courts have come. कि simpliciter retrospective or prospective cancellation of registration cannot result into the denial of ITC. Friends, in every case you will find department using section 155 कि reasonable care should be taken. Section 16(2)(c). मेरा ये पर्सनल व्यू है, लीगल व्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू है. वन, this is my very firm view which I have been taking in my pleading also, and that is simpliciter cancellation of suppliers registration, whether retrospective or prospective, is not a situation covered by 16(2), any clause of the 16(2) at all. आप मुझे एक क्लोज दिखाइए, सिंपल क्लोज A, डबल बी, सी, डी, एक भी क्लोज सेक्शन 16(2) का, not a single clause covers the situation which allows the department to allege the inadmissible ITC merely on the ground of the cancellation of the supplier's registration, whether retrospective or prospective. Department will have to go one step further. Okay, it is not the question of simpliciter cancellation of registration. The supplier was found to be indulged in fraudulent activities, जो उनका standard sentence होता है notice में. Not only that, after that, these fraudulent activities means that there was no supply of goods. यहाँ पे department को आपका defense मजबूत कर सकते हो. Because there can't be any presumption merely based on the cancellation of supply registration that the goods have not moved under the cover of the tax invoices. Because there is nothing like fake invoice. There is nothing like non-genuine taxpayer. What is this non-genuine taxpayer? A taxpayer is taxpayer. An invoice is invoice. An invoice can be invalid for number of reasons, but there can't be fake invoice. क्योंकि वो इनवॉइस पोर्टल पे जनरेट हुए हैं, अंडर वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुए हैं. वो इनवॉइस की वैलिडिटी फॉर द पर्पस ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी कैन बी चैलेंज ऑन एनी नंबर ऑफ ग्राउंड्स. दैट्स अ डिफरेंट मैटर. ये नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर, ये सब वेट अथॉरिटीज का नया कॉइन किया हुआ डिस्क्रिप्शन है. हाउ कैन देयर बी ए जेन्युइन एंड नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर? ए टैक्स पेयर इज टैक्स पेयर. So what I'm trying to say is that ultimately you have to come to the point where you can challenge the department कि आपका non supply of goods under the cover of invoice is merely a presumption based on the supplier's registration cancellation. Simpliciter, and the onus lies on the department. Section 155 does not shift the primary onus to the taxpayer. डिपार्टमेंट में यूज करे वो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. आपके डिफेंस में तो वही होना चाहिए कि द प्राइमरी ऑब्लिगेशन इज कास्ट अपॉन द डिपार्टमेंट टू एस्टैब्लिश दैट द गुड्स हैव नॉट मूव्ड अंडर द कवर ऑफ टैक्स इनवॉइसेस. दिस इज ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द फैक्ट्स ऑफ द केस कि आपका डिफेंस कितना स्ट्रांग है. बट cancellation of registration is not one of the situations covered by section 16(2) simpliciter based on which one can deny the ITC. Next. These are all series of judgments. Next. 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 Supplier's failure to pay tax. This is another. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जरा बात समझ लीजिए आप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस कंडीशन वाज नेवर देयर इन मोडवेट और सेनवेट इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स. Unfortunately, this was part of after Mahalakshmi dying, Bombay High Court upheld the judgment that statutory section 54 amendment. This had become part of the old VAT laws. This is a questionable legacy from VAT regime. फ्रॉड तो सेनवेट में भी होते थे. When I entered the field in 1986, when जब डीप मोडवेट क्रेडिट आई, लेट डॉक्टर वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट आया, मोडवेट स्कीम आई और स्मॉल स्केल एग्जम्पशन आया. 175 बाय 1986, 7.5 लाख का एग्जम्पशन. उस समय मोडवेट स्कीम में भी मैंने डीम क्रेडिट का कंसेप्ट था फेरस नॉन फेरस मेटल के लिए. तब भी मैंने ये 2 व्हीलर पे 10 टन माल जाते हुए देखा है. देयर इज नथिंग न्यू फॉर ऑल दिस फ्रॉड्स अंडर जीएसटी. The scale may have changed. The fundamentals, the characters have never changed. The point is, in spite of this,
Central Board of Excise and Custom, which is now CBIC, never thought it really necessary or fit to introduce a condition कि अगर supplier tax नहीं भर रहा है तो buyer को moderate credit या senate credit नहीं मिलेगी. This got introduced in GST only for the first time at the insistence of the state authorities. And to challenge that, we have all these judgments. No doubt the issue is still hanging fire before the Supreme Court and various high courts. These are the judgments. Next. Suresh Trading is a weight judgment of Supreme Court, one of the important judgment. Previous judgment. RV Enterprise. These are the judgments. We'll have to now wait for the authentic final verdict on this. We hope that because large number of cases across the countries are based on this, the supplier did not pay the tax. And the buyer genuineness of the transaction on the part of the buyer, the compliance with section 16.2 is not disputed by the department, nor disproved by the department. But only on the basis of 16.2C, the credit is being denied to the buyer. You have to continue to fight on this ground, relying upon all these judgments. Next. 2A versus 3B के ये सारे जजमेंट है केरला हाई कोर्ट के कि mere mismatch between 2A and 3B cannot be the ground to deny the ITC. Next. Next. Fictitious transactions and absence of proof for the actual movement, denial of ITC justified. These are the judgments where the ITC denial has been justified. That's why I said everything boils down to the degree of proof. और आप डिफेंस क्या लेते हो? Your defense will again depend upon the actual factual. Ascertain the facts from your client. Without that, we might be actually taking up the wrong option or we might go on the wrong direction, which can later on boomerang. Next. Non-payment of GST. These are the cases where the buyer's credit denial was disallowed, not agreed to by the court, merely on the ground that the supplier did not pay the GST, but they did not declare the 16.2C unconstitutional. They read down. Or read down in what manner? Ki if the buyer is a bona fide buyer and buyer has complied with the conditions, then merely non-payment of GST cannot be by the supplier cannot be a ground to deny the credit to the buyer. To this extent, in these judgments, the courts have actually read down section 16.2C, distinguishing between a bona fide buyer or a buyer who is complicit in the transaction or who could not prove the genuineness of the transaction. Next. Next. However, fearing the peach has been the recent judgment of Gujarat High Court in Maruti Enterprises. I will not go into the details in judgment. In Maruti Enterprise judgment, I had written a detailed note on this, which I had published on LinkedIn. You can go through that. So I will just save the time without going into this. Friends, all said and done, to complete the discussion on the indirect tax, let me say this. Just go to the previous slide, please. Yes. There is one article which I had published in, it was published in 2018 in Chambers Journal, the Chamber of Tax Consultants Mumbai, a very prestigious, very, very good professional institute, very active. तो मैंने किया था typology of frauds under GST. Frauds under GST, a typology. I had written a detailed article because fraud GST, which is operated through the invoice credit mechanism as against the capital subtraction method, capital addition method and subtraction method. There are three methods. Almost all countries, 198 and all countries have adopted invoice credit method. And as I said, invoice could be the biggest tool for the, frauds. And in country like India, invoice could be the largest selling commodity, which I repeatedly say. However, in the European countries, Australia, South Africa, UK, these are the countries who are not immune to these frauds under GST. Huge frauds are taking place under GST or VAT system, whatever you call it. However, the European Court of Justice judgments in these cases, I've cited only few. There are quite a few others. The view is very clear and explicit. If I read the ECJ, European Court of Justice, the observations in these cases is
As to the question whether the VAT on the earlier or later sale of the goods concerned to the end user has or has not been paid to the public purse, the ECJ pointed out that it is irrelevant to the right of the relevant person to deduct input VAT. According to the ECJ, the right to deduct input VAT of a taxable person who carries out such transactions cannot be affected by the fact that in the chain of supply of which those transactions form part, another prior or subsequent transaction is vitiated by VAT fraud without that taxable person knowing or having any means of knowing. Very pertinent observation. What basically the law which flows down, the principle which flows is unless and until the recipient buyer's complicity or involvement or knowledge in the fraudulent activities of the supplier is established by the department by leading the conclusive proof, merely because the supplier has committed some fraudulent activities or supplier has not paid the tax, the buyer cannot be denied the benefit of the ITC. This is the sum and substance of the law laid down. Hopefully, this law will prevail in the even in finally in the GST analysis. We have a series of judgment. Gerulal Balchan, there are series of judgments. If I say right from Madras High Court, Lakshmi Textile, Vinayaka Agencies, Gujarat High Court in Modi Oil Industries, we have Tata Motors Limited case, one of the famous case of Punjab High Court, Punjab and Haryana, Gerulal Balchan versus State of Haryana, 2 SCC 781. One of the earliest cases. To require the recipient buyer to establish the supplier pays the tax is casting an impossible burden on the buyer, and law does not compel somebody to do the impossible. What Punjab High Court says, law cannot put such onerous responsibility on the SSE, otherwise it will be very difficult to hold the law to be valid on the touchstone of Article 14 or 19 of the Constitution of India. A statute has to be read in such a manner so as to do justice to the parties. If it is held that the person who does not deposit or is required to the tax would be put in an advantageous position, whereas the person who has paid the tax would be worse, the interpretation would give result to an absurdity. These are the observations of the High Court. And these defenses come handy when the income tax authority, because if you see, there is a synergies as far as the bogus purchases are concerned. There is a synergy as far as suppression of turnover is concerned. Suppression of turnover, difference in turnover can be genuine reason for because of the very fundamental legal distinction between the two enactments, or there is a simpliciter suppression of turnover, clandestine removal. So I did not go too much into the detail. My thrust was on the reconciliation part because of the inherent distinction between the two legislation for the same transaction tax treatment. However, bogus purchases, both authorities look at it from the same angle. And the important thing is, the latest judgment of the Supreme Court on the bogus purchases is this: if the sales are accepted, then bogus purchases cannot be actually added when the sales are accepted by the department. You cannot say that your sales are genuine, but your purchases are bogus, particularly when the department has not been able to establish anything to the contrary. Bombay High Court judgment in Sunil Kumar Ram Prasad Jain, there's a latest judgment where the SLP filed by the revenue has been dismissed by the Supreme Court on this 100% addition or only profit addition. Even in case of bogus purchases, the Supreme Court said that the High Court, Gujarat High Court had said it will be only the gross profit margin. And Supreme Court dismissed the SLP of the revenue in this case. So this is basically bogus purchase case, and Gujarat High Court judgment. The Supreme Court dismissal of SLP came on 17/4/2026. The case law is PCIT, Principal Commissioner of Income Tax versus Sunil Kumar Parasmal Jain. You will find this in the Google. PCIT versus Sunil Kumar Parasmal Jain, Gujarat High Court judgment, SLP dismissed by the Supreme Court. Friends, there are a lot of confusion about SLP dismissal. A SLP dismissal simply dismissed, or we see no reason to interfere, as such does not become
a binding precedent across the country under Article 141 on the binding effect of the SLP dismissal. Please go through Supreme Court celebrity judgment in M. Kunai Ahmed. Please go through that. But having said this, the judgment will help you. With this, I conclude my talk today. Thanks for the very patient hearing. The participation and listening to me. I'm sorry for the initial technical glitches, but as I said, if there are no technical glitches or something which is happening on the online, all of you will be feeling very uncomfortable. I'm very sure. If everything goes smoothly, then you will be very uncomfortable. Thanks once again. Thanks, VOCA. Well, thanks for Thank you. giving me this opportunity to share my thoughts. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much for this wonderful and very detailed deliberation. कान्हा जी, कान्हा राम चौधरी जी, आपको पीपीटी जरूर मिलेगी. वी विल सेंड इट टू ऑल दी पार्टिसिपेंट जिन्होंने रजिस्टर किया था. सबको ईमेल पे शेयर करेंगे. हम Q&A सेशंस के लिए ओपन हैं. किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. वी कैन अनम्यूट योरसेल्फ. अच्छा, Q&A पे मैं चेक कर लेता हूँ. सर, देयर आर टू क्वेश्चंस दैट आई कैन सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज जो कि रोहित मेहरोत्रा जी ने पूछा है. इफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट searched a person and got loose sheet for sale to some persons not recorded in books of account. After search, income tax department and GST department issue notices to other person alleging they have purchased goods from such person but not recorded in books. How to respond? बात है कि जब डायरी मिलती है और डायरी की एंट्रीज या नोटबुक्स में एंट्रीज जो होती है, तो वो उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है, वो एविडेंशियरी वैल्यू की एक लिमिट होती है. बिकॉज उसके दो रिपरकशंस होंगे. इस प्रकार के एंट्रीज में जीएसटी डिमांड भी खड़ी हो सकती है और इस प्रकार के एंट्री में इनकम टैक्स भी खड़ी हो सकती है. दोनों डिमांड हो सकती है. दिस इज अ सेपरेशन ऑफ टर्नओवर बेसिकली. तो उसमें आपको वो एंट्रीज के जो जिन्होंने एंट्रीज की हुई है, वो राइटर भी कौन है, उसने किस तरह से एंट्री कौन से बेस पे की है, वो एंट्रीज का आपके रिकॉर्डेड सेल के साथ कोई संबंध है कि नहीं. काफी सारे केसेस होते हैं कि जिसमें एक्चुअल इनवॉइस की एंट्री होती है लेकिन कंसिडरेशन 50-50 होता है. ये सब काफी सारे केसेस हम देख चुके हैं इस प्रकार के, पर्टिकुलरली कंज्यूमर आइटम्स में, जहाँ पे द बायर पूरे पैसे कैश में देना, चेक में देना नहीं चाहता है. बट जब वो सब जो कस्टमर के जैसे टाइल्स है या वगैरह जो भी होते हैं, तो उसमें आपको ये जरूर मिलेगी, क्योंकि वो पूरा बेनंबरी जैसा धंधा हो जाता है हार्डवेयर आइटम से, कि जिसमें कस्टमर को जीएसटी, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम अंडर जीएसटी अक्रॉस द वर्ल्ड. कंज्यूमर इज अ टैक्स ऑन कंज्यूमर एंड कंज्यूमर डजंट वांट टू पे द टैक्स. तो एक चैलेंज है. लिविंग दैट असाइड, आपको अगर उन्होंने बायर के स्टेटमेंट, जो रिसिपिएंट ऑफ दोस, अगर उन्होंने स्टेटमेंट लिए हैं, तो आपके पास डिफेंस में वो रिसिपिएंट की क्रॉस एग्जामिनेशन मांगना एकदम जरूरी हो जाता है. वो आपको मांगना है. सेकेंडली, यू कैन डिनाई कि सिर्फ एंट्रीज की हुई है. डिनायल, देर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन डिनायल. सिंप्लिसिटर एक्सेप्ट करने में केसेस काफी, हम एक्साइज में तो ये रूटीन केसेस हुआ करते थे. तो आपको ये क्रॉस एग्जामिनेशन मांगनी है. और दूसरी बात ये कि जो सारे जजमेंट्स है कि मियरली अनऑथेंटिकेटेड एंट्रीज इन द नोटबुक्स और डायरी कैन नॉट बी ए ग्राउंड टू एलेज द टर्नओवर. जो टर्नओवर उसमें से जो फलित हो रहा है वो नोटबुक के एंट्रीज से, वो टर्नओवर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से इतना टर्नओवर के आपके रिकॉर्डेड टर्नओवर के अलावा हो सकता था. दिस कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस. पर्टिकुलरली जब डिमांड बड़ी होती है, बल्क आइटम में होती है, तो एक प्रोडक्शन होता है. जैसे फार्मा इंडस्ट्री की तो बात ही जाने दीजिए, देयर दे कैन नॉट एलेज नॉर्मली. हावेवर, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्री में मेरी मेरी फैक्ट्री कितनी शिफ्ट में चल रही है, मेरी फर्नेस की कैपेसिटी क्या है, हर रोज का मेरा प्रोडक्शन क्या है, उसके हिसाब से मैंने कितना प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया हुआ है. अगर वो प्रोडक्शन में ये अनअकाउंटेड प्रोडक्शन अगर मैं ऐड करूं, तो क्या मैं प्रोडक्शन मेरी कैपेसिटी थी. और उसके सिवा जो मटेरियल जो है, जो बनाने के लिए जो मटेरियल है मेरे पास, जो स्क्रैप है, स्क्रैप के सिवा जो मेरी जो आइटम और भी लगती है इनगट बनाने के लिए, जो ऐड करता हूं मैं, केमिकल्स, मैग्नीशियम वगैरह केमिकल ऐड करता हूं, वो उसकी क्वांटिटी क्या मेरे पास थी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड टू मैन्युफैक्चर दिस मच अनअकाउंटेड क्वांटिटी.
तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस ये सारे डिफेंस आप उस समय ले सकते हो, सिर्फ बायर के स्टेटमेंट पे थर्ड पार्टी स्टेटमेंट, और उस समय आपको थर्ड पार्टी की क्रॉस एग्जामिनेशन जरूर मांगना है। वो नहीं देंगे, वो आपके हित में है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ध्रुव शुक्ला जी का है। जजमेंट ऑफ मारुति सुजुकी गुजरात हाई कोर्ट होल्डिंग सेक्शन 16(2)(c)। अरे सर, इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके रिलेशन में एक क्वेश्चन है, पहले वही ले लेते हैं। हम्म। प्रतीक हेमका जी ने पूछा है इन रिलेशन टू प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर वन पीस एडवाइस सजेशन इन सच केस वेयर लूज सेल्स एस्टिमेट स्लिप्स फाउंड एंड एक्चुअल बुक्स कुड नॉट बी रिकंसाइल्ड इन डीजीजीआई मैटर्स। सर मैंने वही कहा ना, मैंने वो कवर कर लिया है। देखिए, लूज स्लिप्स की एविडेंशियरी वैल्यू वो कंक्लूसिव नहीं होते हैं। इट कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड बेसिस ऑफ एलिगेशन, बट आपको एक तो डिनाई करना है। लूज स्लिप आपने कोई भी कारण से, इनकम टैक्स में आपने काफी सारे ऐसे केसेस हैंडल किए होते हैं, आपको पता है, आपको डिनाई करना है। बिकॉज डीजीजीआई पर्टिकुलरली उनका ध्यान दो ही बात पे रहेगा, कन्फेस करा ले और पेमेंट करा ले। तो ये दोनों चीज पे आपको उसी समय एब्सोल्युटली कंफर्म, थोड़ा मजबूत रहना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टैक्स पेयर्स, कितना मजबूत है टैक्स पेयर, कितना फेस कर सकता है। बट सिंपलीसिटर एक्सेप्ट करने से नहीं होता है। और आप अगर पेमेंट भी करो तो जैसे मैंने कहा, इट शुड बी विदाउट प्रेजुडिस। देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, इट्स नॉट इजियर से आई हैव हैंडल, आई डोंट गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन, उस समय मैं हाजिर नहीं रहता हूँ, कभी भी नहीं। बट आई नो व्हाट कुड बी द प्रेशर, बट वो प्रेशर को आपको हैंडल करना है, एंड देन द डिफेंस विल स्टार्ट। These are all facts-based cases. I can only say principle of law is well settled. Simpliciter unauthenticated entries in the loose notebooks or diary cannot be the ground to allege the suppression of turnover. Okay, sir. We can move to the next question. Hmm. Judgment of Maruti Enterprises Gujarat High Court holding section 16(2)(c). Constitutional validity be used by department in tribunal appeal. What are the Yeah. defenses available to taxpayer in such situation? You see, मारुति एंटरप्राइजेस में काफी लूज एंड छोड़ दिए हैं, काफी सारे। हाँ, और जैसे वो मैंने मेरी इनिशियल नोट्स में, आर्टिकल में मैंने लिखे हैं, इन माय ओपिनियन मारुति एंटरप्राइजेस विल ओनली, जैसे इकोम जिल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिसको डिपार्टमेंट फ्रीक्वेंटली यूज करती है, इकोम जिल को, इसी तरह से ये मारुति एंटरप्राइजेस may come handy in the hands of the department. It will not be conclusive of the arguments, because in spite of Maruti Enterprises, आप देखेंगे रिसेंटली सारे जजमेंट्स जो आ रहे हैं, काफी सारे, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, all these cases they have simply said that mere cancellation of the registration by the supplier or even non-payment of the tax, after Maruti also, non-payment of tax simpliciter cannot be the ground. Gujarat High Court has merely denied the unconstitutionality argument. और उन्होंने कहा है, जो ऑब्जर्वेशन सारे किए हुए हैं, कि वंस देर इज अ कंडीशन दैट द सप्लायर डज नॉट पे द टैक्स, यू विल लूज द बेनिफिट। काफी सारे जजमेंट्स, एराइज इंडिया, ओम क्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग, सुरेश ट्रेडिंग, एंड पर्टिकुलरली दी, ये जो सारे जो जजमेंट्स है, वो सारे जजमेंट्स को काफी सारे लूजली डिस्कार्ड कर दिए है। तो इन माय ओपिनियन द बैटल इज स्टिल ऑन, देयर इज नो रीजन टू लूज द हार्ट, वी हैव टू मच टू आर्ग्यू, प्लीज कीप ऑन आर्ग्यूइंग ऑन द सेम बेसिस, रिलाइंग अपॉन ऑल द जजमेंट्स जो मैंने मेरी साइट पीपीटी में दिए हुए हैं। ठीक है नेक्स्ट। सर, ये एक क्वेश्चन है सेम, वेदर पैरेलल बुक्स एंड लूज शीट्स आर सेम और डिफरेंट। आई मीन पैरेलल और लूज स्लिप में कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। एक आपके एनीथिंग विच इज Exactly. अदर देन द प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड वो सब सेम पे हाँ आ ठीक जाते है, हैं। understood. We can move to the next question. हम्म। Sir, Sunil Singhal ji is asking, sir, you said while reversing ITC in GST case, write a line in reply of GST for income tax perspective so that in income tax case, purchases are not treated as bogus. क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये इंटरलिंक करता है? वो करते ही है ना। पर्टिकुलरली अभी जो जिस तरह से जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मैंने देखा है कि मेजर केसेस में अभी रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मूव हो रही है।
बाद में इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन से केस में आगे बढ़े, कहाँ पे रीओपन करे असेसमेंट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, आई एम नॉट ऑन दैट। बट व्हेन Same can be vice versa also. I think same वैसे can be वर्षा vice ऑल्सो, versa. वैसे वर्षा Uh, ऑल्सो, पर अभी क्या है कि सडनली द जीएसटी हैज बिकम मच मोर एक्टिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इनकम टैक्स। yes, right, अर्लियर अब तक क्या right, था, right. इनकम टैक्स से मूव हो रहे थे, तो Yes, पहले yes, सेल टैक्स yes, से भी yes. होते थे। सो दैट्स व्हाई आई से कि वंस आई डोंट लाइक टू go for the litigation. I don't like my client to drag to litigation unnecessarily. That's why I use the word damage control. आपके योर क्लाइंट कुड बी योर बेस्ट गाइड कि आपको क्या डिफेंस स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगर अगर क्लाइंट के ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, आपके पास प्रूफ है, फिर भी आपको लड़ना ही है, बट उस समय रिवर्सल भी करना है कोई भी कारण से, राइट? तो उस समय रिवर्सल करते समय आपको ये नोटिंग करनी है। और इवन एक्चुअल बोगस केस में भी अगर आप क्लोज करते हो, तो यू कैन से दैट कि टू अवॉइड द लिटिगेशन वी आर मेकिंग दिस पेमेंट विदाउट प्रिजुडिस टू अवर कंटेंशन दैट अवर ट्रांजेक्शंस आर जेन्युइन। ये आपको कहना है ताकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को आपको ये फोर्स करना है कि वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें। वो सिंपली आपके जीएसटी के कन्फेशन पे अपना केस ना बनाए, आपको उनको भी काम पे लगाना है। दे हैव टू अंडरटेक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। Okay, sir. The next question from Ridul Basia ji is, what kind of notices does a person receive as a part of cross verification, and whether replying to those notices are just optional or it's सर देखिए, mandatory to as be far as replied? GST is concerned, there are the notices can be, if I loosely use the word notices, there are three intimations. One is notice based on the scrutiny of the returns under section 61 ASMT 10. It is not a show cause notice, it is a starting point. The word scrutiny need not be compared with the word scrutiny in income tax. ये एक बहुत भारेखम वर्ड यूज किया है, एक्साइज और सर्विस टैक्स में स्क्रूटिनी वर्ड था ही नहीं, करेक्ट? तो ये ठीक है, वेट से आया हुआ है ये। तो दे आर चेकिंग द रिटर्न एंड दे आर फाइंडिंग सम डिस्क्रिपेंसीज। पैरा 73, पैरामीटर 74, पैरामीटर 103, पैरामीटर 10, जो 12 पैरामीटर उनके हैं, वो सब में आपको उनसे डिटेल्स मांगनी है। पहली बात तो वो लूजली बना देते हैं, आपको उसमें रिप्लाई देते समय सिर्फ रिकंसिलिएशन वगैरह विद ड्यू रिस्पेक्ट सर इन अ लाइटर वेन। I have seen my majority of the talks have taken place in excise and service tax also before chartered accountant fraternity over last 30 years. Most of the CAs are actually attuned to think and work in the facts and figures. आपको सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ध्यान नहीं देना है, फिगर वर्क पे नहीं जाना है। यू आर सो मच यूज टू रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन इज इंपॉर्टेंट, बट डोंट डाइल्यूट योर लीगल डिफेंस व्हेन यू आर गिविंग द रिकंसिलिएशन। आपको रिकंसिलिएशन Right. कब देना है, किस तरह से देना है, वो अलग बात है। बट आप जब उनसे ASMT 10 के लेवल पे या DRC 01A वो इंटीमेशन मांगते हो पार्ट बी के रिप्लाई पे, या आप जब सोकोस नोटिस का रिप्लाई देते हो, तब आप उनसे जो डिटेल्स मांगते हो एलिगेशन के बेसिस जिनके पर हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे, ये आपका लीगल डिफेंस है। इससे नथिंग टू डू विथ योर रिकंसिलिएशन। और उस तरह से, लेकिन ऑडिट FAR, दिस इज अनदर सोर्स ऑफ द डिस्प्यूट। FAR फाइनल ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 65 सब सेक्शन 6, और सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सोकोस नोटिस डायरेक्टली इश्यू होती है, आपको ऑडिट के रिपोर्ट पे ASMT 10 के रिप्लाई में और DRC 01A के रिप्लाई में काफी काफी अलर्ट रहना है। उस समय आपको यह सोचना है कि मुझे क्या नहीं देना है। सोकोस नोटिस में आपको यह सोचना है कि मुझे सब कुछ देना है, क्योंकि लोग DRC 01 या ASMT 10 पे सारे रिप्लाई बड़ी बड़ी डिटेल में दे देते हैं, जैसे दे आर फाइटिंग द सोकोस नोटिस। द ऑफिसर इज गोइंग टू डिस्कार्ड इट ओनली इन वन सेंटेंस, योर रिप्लाई इज नॉट फाउंड एक्सेप्टेबल, नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी, and then he Sir, will issue a Mridul ji show is cause asking, notice. I am asking, Mridul ji is asking, I am asking from the point of someone who has received such cross-examination notice from the department. No, that is a different matter. That was in the cross examination report. Yani, I mean, he is what? He is buyer or seller? Sir, Mridul ji, you can ask to raise your hand. I will turn you to in the panelist, so you can ask your question live. Can you raise your hand, Mridul ji?
Okay. Hello. Yes, Mridul ji. हाँ Good बोलिए evening, sir. हाँ गुड इवनिंग Sir, actually, I'm asking from the point of someone. Basically, if he's getting some notices from department, like whether you have supplied whether you have made that supply to the recipient or like that, ओके from both income tax देखिए perspective and from GST perspective. ओके ब्रुदिल जी एक बात समझ लीजिए ये एक जनरल सेंटेंस में कर रहा हूँ एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट को एज ए प्रोफेशनल वी शुड नॉट कॉल इट नोटिस ये कंसेप्ट हमें मन में से निकाल देना है इट हैज ए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ओके एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज नॉट ए नोटिस सेक्शन 70 में जो समन्स आ रहा है वो इट इज नॉट ए नोटिस डिपार्टमेंट आस्किंग फॉर सम इंफॉर्मेशन जैसे आपके केस में वो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं वो इट इज नॉट ए नोटिस नोटिस यानी हमें ये एकदम तय कर लेना है नोटिस में सोकोस नोटिस अंडर 73 और 74 और 74A बिकॉज इट हैज a lot of impact I can see that नाउ कमिंग टू जो इंक्वायरी उनसे हो रही है इट मीन्स कि आपके क्लाइंट या जो भी है वो सप्लायर है तो एज ए सप्लायर ही हैज टू स्टिक टू द ग्राउंड दैट आई हैव सप्लाइड Got ठीक it. है सर. Okay, या Mridul ji, hope your हाँ But query I बिकॉज is was अगर just resolved अगर asking to some whether extent. that query is optional or that explanation is optional, offering that explanation. नहीं नहीं Like, नहीं इट इज नॉट एन ऑप्शनल यू हैव टू रिप्लाई नेवर एवर इग्नोर समन्स डोंट गेट पेनिकी बाय द समन्स हमें हमें क्लाइंट को कहना है एज आई ऑलवेज से नो नीड टू गेट पेनिकी बाय द समन्स बट नेवर टू टेक समन्स लाइटली like just you said in your presentation, like if the basically the person that who is basically cross-examined, हम्म like if it does not respond to that notice, then it would be in your favor only, या like इट from the इट नहीं assessor's नहीं point दैट of इज view. राइट दैट इज Mm-hmm. राइट इन अदर वर्ड्स क्या होता है कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बात आएगी जब एजुडिकेशन में रिसिपिएंट ऑफ द सोकोस नोटिस ने कहा है कि मुझे इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन चाहिए जैसे बायर रिसिपिएंट कहता है मुझे सप्लायर की क्रॉस एग्जामिनेशन चाहिए अब सप्लायर अगर हाजिर नहीं होता है कोई भी कारण से क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस को हाजिर करने की जवाबदारी डिपार्टमेंट की है बायर की नहीं है रिसिपिएंट ऑफ नोटिस की नहीं है वो डिपार्टमेंट ने जिनके स्टेटमेंट लिए हैं वो स्टेटमेंट को अगर उन्होंने नोटिस के सामने यूज किए हैं एलिगेशन के लिए तो डिपार्टमेंट हैज टू प्रोड्यूस दैट विटनेस नाउ इन दैट केस दैट विटनेस नाउ अगेन देर आर नो स्टैंडर्ड लॉ ऑन दिस if the witness does not present himself or department disallows the cross examination then that statement cannot be relied upon in ultimately adjudicating the matter against the party that is the law an uncontested statement cannot be the basis. बट उस समय वो अपने आप को किस तरह से अवॉइड करे जेन्युइन रीजन के लिए अगर वो अवॉइड कर सकते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट ओपन प्लेटफॉर्म में कहना मुश्किल है कि वो किस तरह से अपने आप को मैं खाली इतना ही कह सकता हूँ कि अगर वो हाजिर नहीं होता है तो रिसिपिएंट ऑफ द नोटिस जो सोकोस नोटिस फाइट कर रहे हैं वो कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन आई कैन ओनली से दिस Okay, sir, can we take two more questions? या प्लीज If आई you एम allow. Oh, we have crossed the time, but still, with your permissions. And next question, Sunil ji is asking, sir, can you please request to Shailesh sir to repeat that line, which to be included in GST reply? कि GST reply में what line has to be included? 2B वर्सेस 3A में 2A वर्सेस 3B में I think it's 2A versus 3B or it is related. I am not sure. We can, Sunil ji, you can please mention आप हाँ किस सुनिए हाँ जरा perspective through which question you are asking. Okay, we can move to the next question. Rohit Mehrotra ji, can creditors detailed production details be asked in notice under section 61? in production details यानी in what context they are occurring that will become important because they are basically section 61 में they are only the scrutinizing examining the returns only it Yes, can I be an don't think independent they can inquiry go to. They they can go to. cannot and secondly जब मैं ये बात सेक्शन 61 की कर रहा हूँ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो आई वांट टू मेक इट वन भले सेक्शन 61 का टाइटल एसएमटी 10 का है नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज बट दैट नोटिस इज नॉट अ शोकॉज नोटिस नंबर वन इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिटिगेशन इट्स अ डिफरेंट मैटर सेकंडली assessment there is no assessment under GST please understand this there was never an assessment under excise and service tax when I talk about the assessment as was done under VAT laws CST and VAT laws में
और असेसमेंट विच इज बीइंग अंडरटेकन अंडर इनकम टैक्स। जब आपका असेसमेंट रिटर्न 143 में आता है, आपको इंटीमेशन आती है कि आपकी लायबिलिटी इनकम टैक्स रिटर्न, there is no concept of assessment by the officers of the return, the returns which you are filing. It is all self-assessed liability. And there is a marked difference, qualitative difference between assessment and adjudication. So हमें assessment वर्ड से भी confusion नहीं होना है. There is nothing like assessment under GST. हाई कोर्ट में भी ये जो वर्ड यूज होते हैं असेसमेंट ऑर्डर, आपका एजुडिकेशन ऑर्डर जो सोकोस नोटिस पे इश्यू होता है वो एजुडिकेशन ऑर्डर होता है, वो असेसमेंट ऑर्डर नहीं होता है। ये सब जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ लॉट, आई मीन इट्स अ सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ where I can say that how many misconceptions are prevalent among the taxpayer and tax professionals. सुनील जी का जो क्वेश्चन है अगर वो बताएं कहाँ पे है, राइट? अच्छा, सुनील जी is, I think, सुनील he is, Sunil ji, Yeah, can you probably please it's not there. repeat your question, that from which perspective you were asking to repeat that particular sir's line, that yes, sentence. If you are still there here in the attendance list, you can please unmute yourself or raise your hand so that we can clear your query. Sir, we at Voice of CA, we make ensure that each and every query is resolved. Okay, In thank the, you. in the history of 10-15 years, we have not left any unheard query in our webinar. So with this, I think, sir, in today also we have covered each and every query. No query is unheard, no query is unanswered. Yeah, with all your support and of absolutely the patience of the attendees. Yes. I think we professionals are so much patient right now, after dealing with the GST portals and this GST tribunal portal And also. believe me, This appellate tribunal. it will become a perpetual quality, permanent. Right, sir. So with due regards, I would now like to officially close this session, and really thankful from the whole team of Voice of CA. In the absentia of all the the members of the Voice of CA, to present your daily on your thoughts, your insights on this very practical topic, I must say. I think हमें 1-2 hours का एक सेशन और रखना पड़ जाएगा, तो एक क्वेरी सेशन के लिए अलग से we can plan more sessions also with you, and we will definitely inform to the members regarding the same. Okay, sir. Once again, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Control room, now you can close the session officially, and so that we can quit. Yeah. Thank you, very much. sir. Thank you. Thank you for your time, sir. Thank you.